Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our 6th chapter, that is molecular basis of inheritance, and our today's topic is regulation of gene expression. Now students, genes, they are expressing themselves by forming proteins. So the control over the functioning of genes, that is known as regulation of gene expression. Now these genes, they are actually of two types. One are constitutive or housekeeping genes, and the second are non-constitutive or regulator genes. Now what is the difference between these two genes? Students, constitutive genes or housekeeping genes, they are expressed all the times because they are involved in some vital biochemical processes. For example, students, जो genes involved है in the process of cellular respiration, बिकॉज रेस्पिरेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. सो जो जीन्स जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, दे आर एक्टिव ऑल द टाइम. सो दीज जीन्स आर नोन एज कंस्टिट्यूटिव जीन्स. इनके ऊपर कोई रेगुलेशन मैकेनिज्म नहीं है. दूसरी जीन्स है नॉन कंस्टिट्यूटिव और रेगुलेटर जीन्स. नॉन कंस्टिट्यूटिव और रेगुलेटर जीन्स, दे कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स. सो हम कह सकते हैं कि जो नॉन कंस्टिट्यूटिव और रेगुलेटर जीन्स हैं, इनके ऊपर रेगुलेशन है. इनको स्विच ऑन या ऑफ किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, व्हिच इज मेंशन्ड इन आवर सिलेबस आल्सो. फॉर दिस वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ओपेरॉन. ओपेरॉन स्टूडेंट पार्ट है डीएनए का which is acting as self-regulating unit. Operon is a part of DNA which is acting as self-regulating unit. हम operon की structure जो है वो डिटेल में करेंगे, और operon में कुछ structural genes होती हैं and repressor present होता है. और ये operon जो है that is a mode of regulation in prokaryotes, और ये सिर्फ prokaryotes में ही देखा गया है. और इस ओपेरॉन मॉडल को डिस्कवर्ड किया था टू साइंटिस्ट ने, फ्रांसिस जेकॉब एंड जैकिस मुनार्ड, इन द ईयर 1961. So what is operon? Operon is a part of DNA which is acting as self-regulating unit. Now students, हमारे सिलेबस में है लैक ओपेरॉन, और लैक ओपेरॉन जो है that is a type of inducible operon. So इससे पहले हमें पता होना चाहिए what is meant by inducible operon, and second is repressible operon. Now what is inducible operon? Students, you must know the meaning of two terms. One is substrate और second है product. सबस्ट्रेट स्टूडेंट एंटर कर रहा है किसी मैकेनिज्म में, और प्रोडक्ट जो है दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर अ मैकेनिज्म. सबस्ट्रेट क्या है? दैट इज एन एंट्रेंट. वो एक एंट्रेंट है जो मैकेनिज्म के अंदर एंटर कर रहा है, और प्रोडक्ट जो है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जीन. नाउ इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या है स्टूडेंट? इंड्यूसिबल ओपेरॉन पहले स्विच ऑफ है और बाद में इट इज स्विच ऑन ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ द सबस्ट्रेट. सो इंड्यूसिबल ओपेरॉन ये पहले स्विच ऑफ होती है और बाद में ये स्विच ऑन हो जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ द सबस्ट्रेट. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और इंड्यूसिबल ओपेरॉन में एग्जांपल है लैक ओपेरॉन, और दिस लैक ओपेरॉन इट इज मेंशन्ड इन आवर syllabus. So we will be doing lac operon in detail. Second है student repressible operon. Repressible operon इसका opposite है. Repressible operon जो है that is पहले switch on है और later on it is switch off due to the accumulation of the product. प्रोडक्ट के एक्यूमुलेशन होने के कारण जो ओपेरॉन, जो जीन्स पहले ऑन थी वो बाद में ऑफ हो गई. दैट इज द रिप्रेसिबल ओपेरॉन. सो इंड्यूसिबल ओपेरॉन को इंड्यूस हुआ है, वो पहले ऑफ है, वो ऑन हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सबस्ट्रेट, जबकि रिप्रेसिबल ओपेरॉन पहले ऑन है, बाद में ऑफ हो गया है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट. सो
will be doing the structure of operon and the functioning of lag operon. So students, let's start it. So students, let us start the regulation of gene expression. Regulation of gene expression means the mechanism of switching on and off the genes depending upon the requirement of the cell. So depending upon the requirement of the cell, the genes, they are either switched on or off, and this is known as gene regulation. Now the gene regulation, it occurs at 4 levels. First is at transcriptional level when the messenger RNA is synthesized. Second is at processing level at the time of processing of this messenger RNA when the cap and tail is added to this messenger RNA. Third, at the time of transport of messenger RNA from the nucleus to the cytoplasm. And fourth is at the translational level when this messenger RNA will guide the formation of proteins. So students, the regulation of gene expression is taking place at 4 levels: at transcriptional level, at processing level, at the time of transport of messenger RNA, and at translational level. Now we have to do gene regulation in prokaryotes, which is also mentioned in our syllabus. We all know that in case of prokaryotes, there is no bound nucleus containing genetic material, or the genetic material, the DNA, that is directly present in the cytoplasm. And in case of prokaryotes, dear students, transcriptional and translation, both these processes, they takes place simultaneously. प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो साथ साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है इन दी साइटोप्लाज्म. और प्रोकैरियोट्स के केसेस में स्टूडेंट्स जो रेगुलेशन हो रहा है जीन एक्सप्रेशन का, दैट इज टेकिंग प्लेस एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. सो एक्चुअली जीन रेगुलेशन जो है दैट इज टेकिंग प्लेस एट 4 डिफरेंट लेवल्स, but in case of prokaryotes it is taking place at the transcriptional level. Now we all know students that these genes, they are of 2 types. One is housekeeping genes or constitutive genes, and the second is regulated or non-constitutive genes. The constitutive or housekeeping genes, they are expressed all the time because वो किसी ना किसी important biochemical processes में involved हैं, like respiration. Now respiration is a continuous process, तो respiration में जितनी भी genes involved हैं students, these are constitutive or housekeeping genes. Whereas जो regulated genes हैं, they can be switched on or off depending upon their requirements. और regulated genes या तो induce हो रही हैं, either they are turned off on, अर्लियर वो ऑफ है और उनको ऑन किया जा रहा है, उनको इंड्यूस किया जा रहा है टू वर्क, और दे कैन बी repressed also, they can be switched off also. So regulated genes, when they are switched on, they are known as inducible, and when they are switched off, they are known as repressible. Now students, in case of prokaryotes, there are 2 types of gene regulation. One is inducible regulation and the second is repressible regulation. So अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि inducible means it will be switched on. So in case of inducible regulation, the genes, they are switched on due to the presence of the substrate. Clear हो गया student? Whereas repressible regulation में the genes, they are switched off due to the presence of the product which is acting as the repressor. Clear हो गया? So in case of inducible operon, genes जो हैं वो switched on हो रही हैं due to the presence of substrate जो कि act कर रहा है as an inducer. Whereas in case of repressible regulation, the genes, they are switched off because जो product है that is acting as a repressor. Now students, inducible operon, that is उसका example है lac operon, and this lac operon, it is mentioned in our syllabus.
So we will be doing lac operon in detail. और repressible operon में student example है tryptophan operon का. Now student, we must also know the meaning of negative control and positive control. Negative control ज़्यादा clear तब होगा when we will know the structure of operon. So negative control में regulator gene का जो product है वो switch off कर रहा है operon को, उसको उस पर नेगेटिव अफेक्ट डाल रहा है. सो द प्रोडक्ट ऑफ द रेगुलेटर जीन दैट इज स्विचिंग ऑफ द ओपेरॉन, वेयर एज पॉजिटिव कंट्रोल में रेगुलेटर जीन का जो प्रोडक्ट है वो ओपेरॉन को स्विच ऑन कर रहा है. क्लियर? सो जो लैक ओपेरॉन है दैट इज अंडर नेगेटिव कंट्रोल. तो जब हम लैक ओपेरॉन की वर्किंग करेंगे देन वी विल नो द मीनिंग ऑफ नेगेटिव कंट्रोल ऑल्सो. सो वी हैव इन आवर सिलेबस this lac operon or the lactose operon. So we will do this lac operon or lactose operon in detail, which is under negative control. Now first of all, who discovered the operon system? So the first insights into the regulation of gene expression that was provided by two scientists, Jacob and Monod, in the year 1961. And they studied the regulation of genes encoding key enzymes involved in the metabolism of lactose. So lac operon जो है that was the first operon that was discovered by these two scientists in the year 1961, and this is the first operon which was discovered in case of prokaryotes. So prokaryotes में जो पहला operon मॉडल डिस्कवर्ड हुआ था दैट वाज लैक ओपेरॉन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड इन द ईयर 1961. नाउ स्टूडेंट, लैक ओपेरॉन करने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज अ ओपेरॉन. नाउ स्टूडेंट, दिस ओपेरॉन इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट. This operon, it is a self-regulating unit and it consists of one or few structural genes and control region. So operon जो है that is a self-regulating unit which consists of 1 to 3 or one or more structural genes and a control region. So we will do all of these parts one by one. Now in case of lac operon, these structural genes, they are of three types, that is X, Y and Z. और ये structural genes जो हैं students, they will first form messenger RNA and then they will form the proteins, because prokaryotes में transcription और translation जो है that is taking place at the same time, that is taking place simultaneously. तो structural genes का काम क्या है student? Structural genes का काम है messenger RNA form करना and then the desired proteins form करना. Now what is the function of this regulator gene? This regulator gene is also known as inhibitor gene. Now student, ये regulator gene जो है this is forming a repressor. This is forming a repressor, and this repressor will bind at operator site which is the control region. So regulator gene का function क्या है? To form a protein which is known as repressor, and this repressor will bind at the operator region and will switch ऑफ दी ओपेरॉन. और इस तरीके से स्टूडेंट जो ओपेरॉन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा. सो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज द साइट, ऑपरेटर जीन इज द साइट वेयर दिस रिप्रेसर विल कम एंड बाइंड. एंड व्हाट इज दिस पी और प्रमोटर? प्रमोटर रीजन इज द साइट वेयर द एंजाइम RNA polymerase will bind. So students, I think operon की सारी स्ट्रक्चर जो है, सारी जीन्स क्लियर होंगी. स्ट्रक्चरल जीन्स का काम है मैसेंजर RNA फॉर्म करके डिजायर्ड प्रोटीन फॉर्म करना,
रेगुलेटर जीन का काम है रिप्रेसर फॉर्म करना, विच इज़ अ प्रोटीन, जो कहाँ पे जाके बाइंड करती है, ऑपरेटर पे जाके बाइंड करती है और ओपेरॉन को स्विच ऑफ कर देगी. सो ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज द साइट वेयर द रिप्रेसर दैट इज गोइंग टू बाइंड. जबकि प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज द साइट वेयर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज विल कम एंड इट विल बाइंड. सो आई थिंक ओपेरॉन की स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होगी. ओपेरॉन जो है दैट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट जिसमें 1 to many structural genes are present and it is having a control region, and this control region is formed of regulator gene, promoter gene and operator gene. So the operon, it consists of operator gene. Operator is the binding site for repressor. Promoter gene. Promoter gene is the binding site for the enzyme RNA polymerase. Next, repressor gene. Repressor is a protein coded by the regulator gene, and this repressor, it binds at the operator, and in this way the operon will be switched off because now the RNA polymerase which is present at the promoter site will not be able to come to the structural genes. And the last is the regulator gene which is also known as I. I represent कर रहा है student inhibitor gene को. So the regulator gene, it is also known as inhibitor gene. और वो क्या कर रहा है student? regulator gene और inhibitor gene, it is controlling the production of the repressor protein. So this is all about the structure of the operon, and this operon, it consists of these types of genes: operator gene, promoter gene, repressor and the regulator gene. Now student, our next topic which is mentioned in our syllabus also, we have to do the lac operon in detail. Now student, lactose operon, it is designated as lac operon, and the lac operon codes for enzymes involved in the catabolism of lactose. So lac operon जो है that is involved in a, it is involved in a catabolic pathway. Catabolic pathway means जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, बिकॉज कैटाबॉलिक रिएक्शंस मीन्स ब्रेक डाउन रिएक्शंस. सो लैक ओपेरॉन में कैटाबॉलिज्म हो रहा है लैक्टोज का, एंड वी ऑल नो दैट लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर. मिल्क में ऑलरेडी स्टूडेंट्स शुगर प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज नोन एज लैक्टोज. एंड दिस लैक्टोज, इट इज़ अ डाइसेकेराइड. इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. So lac operon में lactose जो है that is catabolized into glucose and galactose, and it is an inducible operon because the presence of the lactose induce the operon to switch on. Because ये जो operon model है, this is switched on due to the presence of the substrate, और ये substrate क्या है student? लैक्टोज. लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट जब ओपेरॉन में एंटर करता है तो ओपेरॉन क्या हो जाता है? स्विच ऑन हो जाता है. और अर्लियर ये क्या है? स्विच ऑफ है. बिकॉज दिस ओपेरॉन दैट इज मेड टू वर्क, दैट इट इज स्विच्ड ऑन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर, एंड दिस इंड्यूसर इज lactose. Therefore the lac operon is known as inducible operon. Now student, how the lac operon will work? We will do it with the help of a diagram. First, in the absence of lactose, the regulator gene, it will produce a repressor protein. This repressor protein will bind to the operator site and will prevent the transcription and translation. How it will work? Let us do with the help of this diagram. So this is the regulator gene which is denoted by the letter I, or inhibitor gene, it is also known as inhibitor gene. So student देखो, regulator gene जो है that is forming a protein which is known as repressor.
Now where this repressor will go, students, this repressor will go and it will bind at the operator gene. Now when it will bind at the operator gene, now देर इज ब्लॉकेज ऑफ पाथवे. पाथवे जो है वो ब्लॉक हो गया है. प्रमोटर साइट पे स्टूडेंट क्या प्रेजेंट थी? एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज दैट वाज प्रेजेंट. So when the path is blocked due to the presence of the repressor, now RNA polymerase is not able to move from the promoter to the structural genes. So in this way, there will be no transcription and there will be no translation. So the operon, it is switched off. ये वर्क नहीं कर रहा है. It is sleeping at this time. क्लियर हो गया स्टूडेंट? सो लैक्टोज की एब्सेंस में हो क्या रहा है? रेगुलेटर जीन रिप्रेसर फॉर्म कर रहा है. ये रिप्रेसर बाइंड करता है एट द ऑपरेटर, एंड व्हेन इट बाइंड्स एट द ऑपरेटर, द पाथ इज ब्लॉक्ड. देयरफॉर the RNA polymerase is not able to move from the promoter to the structural genes. So there is no transcription and there is no translation. This is taking place in the absence of the inducer. Now what will happen? When the inducer, which is lactose in case of lac operon, when this inducer, it enters, then what will happen? This inducer, it will bind with the repressor, and when it will bind with the repressor, it will cause a change in the shape of the repressor. So when the inducer, it comes, it binds with the repressor, so there is a change in the shape of the repressor. Now this repressor is not able to bind with the operator. So path जो है that is cleared. Now the RNA polymerase, it will move from the promoter to the structural genes. Transcription will take place, messenger RNA will be formed and translation will take place. Clear हो गया students? So lactose की presence में, and this lactose which is acting as an inducer, when this lactose is present, this lactose, it combines with the repressor, and in this way inducer repressor complex will be formed. This is inducer repressor complex will be formed, and when this inducer repressor complex is formed, then the shape of the repressor gets changed. Now this repressor, it is not able to bind with the operator. So the RNA polymerase will move from the promoter to the structural genes. Transcription will take place and translation will take place. And the three structural genes, they will form their desired proteins or the enzymes. Now the Z gene will form the enzyme beta galactosidase. The Y gene will form permease enzyme, and the A gene will form the trans-acetylase enzyme. So these three enzymes, they will be formed after the entrance of the, or after the presence of the inducer in the lac operon. So student, when the lactose is introduced, it binds with the repressor. The repressor now fails to bind with the operator. Therefore, the operator is made free, and it induces the RNA polymerase to bind to the initiation site on promoter, which leads to the synthesis of lac messenger RNA. And now this messenger RNA, it codes for the three enzymes which are necessary for the lactose catabolism. सो स्टूडेंट, ये भी डायग्राम है. आई थिंक इस डायग्राम से भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा. द रेगुलेटर जीन दैट इज फॉर्मिंग दिस रिप्रेसर इज बाइंडिंग विद द ऑपरेटर. सो देर इज नो ट्रांसक्रिप्शन एंड देर इज नो ट्रांसलेशन. व्हेन द लैक्टोज इज इंट्रोड्यूस्ड, दिस लैक्टोज बाइंड्स विद द रिप्रेसर, और इस तरीके से रिप्रेसर की शेप देख रहे हो स्टूडेंट्स, इट गेट्स चेंज्ड. नाउ इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर.
So there will be so now the RNA polymerase will move from the promoter to the structural genes, and transcription and translation will takes place, and three enzymes they will be formed. So students, these are the three different enzymes which are formed by the structural genes of lac operon, lac Z, Y and A. Lac Z forms beta galactosidase enzyme which breaks lactose into glucose and galactose. The lac Y genes form permease enzyme. This permease enzyme causes the active transport of lactose into the bacterial cell. And the lac A gene, it forms thiogalactoside transacetylase, and this enzyme, it helps the bacterial cell to get rid of the toxic thiogalactoside. So students, this was all about the functioning and the structure of the lac operon. I hope student, with the help of these pictures and diagrams, lac operon will be more clear to you. So students, आई थिंक ये टॉपिक जो है तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू.